सब किसान भाइयों को मैं बीएसएफ के तरफ से देवेंद्र व्यवहारे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जो लोग सभी किसान भाइयों, खास करके टमाटर के किसान इस संगोष्ठी में डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों से हम डिजिटल के माध्यम में बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए हैं और एक अच्छा माध्यम हो गया कि जिससे हमको जानकारी अच्छी तरह से मिल सकती है। आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम देख रहे हैं कि टमाटर की फसल हम हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से उसकी किसानी करते हैं। पर जब देखते हैं हम उसका जब आजकल जब पूरा ग्लोबल लोकल एक हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि जो भी विश्व में जो भी अच्छी तरह से तकनीक जो है वो हमारे भारत के जो किसान हैं उनको भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे किसान भाई जुड़ रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि उनको इस संगोष्ठी से फायदा मिलेगा। कुछ किसान भाइयों के लिए हम थोड़ी देर रुकते जिससे हम हमारा कार्यक्रम वो अच्छी तरह से देख सकेंगे। अब मेरे पास देख रहा हूँ मैं यहाँ कुछ लिंक है कि जिससे पता चल जाता है कि भारतवर्ष के सभी भागों से यानी सभी राज्यों से किसान भाई जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश है, बाद में महाराष्ट्र के किसान भाई है, छत्तीसगढ़ के किसान भाई है कि जो यहाँ जुड़ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पहले टमाटर की जो खेती थी कुछ प्रदेश से सीमित थी, लेकिन आज का जब 2023 की जो बात आती है तो ये सीमित नहीं है। ये हर जगह में टमाटर की खेती हो रही है और हर वहाँ के जो किसान जो है वो हमको हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनको भी अच्छी तरह से एक जिसको बोलते हैं कि अच्छी तकनीकी जानकारी चाहिए कि जिससे वो टमाटर की किसानी एक खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं और जो वैश्विक जो मार्केट है, वैश्विक जो जहां हम हमारा उपज लेके जाते हैं अच्छी तरह से उपज ले सकते हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को फिर से यहाँ आमंत्रित करता हूँ और आप अगले 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है अभी 4 बजे शुरू हुआ है, 5 बजे हम यहाँ इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आज आपके जो भी कोई प्रश्न हो गए, आपके साथ में एक स्क्रीन होगा, उसमें चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए कुछ प्रश्न के उत्तर जो हम यहाँ के प्रदेश परिपक्ष में होंगे तो उसका जवाब देंगे और कुछ के जो प्रश्न अगर कहीं बाहर के इससे हो गए तो उसकी यहाँ अगर हम उसका जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल देंगे, नहीं तो आपके पास उस जवाब को पहुंचने की पूरी व्यवस्था करेंगे। क्या हम हमारे कार्यक्रम को शुरू करते हैं? तो चलो हम हमारे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं फिर से सभी जो किसान भाई है उनको यहाँ तहे दिल से बीएसएफ इंडिया लिमिटेड तरफ से मैं देवेंद्र भाई आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी मैंने आपसे चर्चा की है कि टमाटर की तकनीकी अभी बदल रही है। हर जगह अलग अलग प्रकार की खेती हो रही है, टमाटर की उपज भी बढ़ रही है और हमारे जो भारतवर्ष के किसान है वो भी चाहते हैं कि हमको अच्छी तरह से अच्छी उपज आ जाए और हम पूरे विश्व के जो किसान है उनके साथ सहभागी हो सके, उनके साथ उस जो स्पर्धा में है उसमें हमने भाग ले सके। तो एक है कि कुछ जानकारी हम हमारे जो जब हम किसानों से मिलते हैं, हम संगोष्ठी करते हैं तो जानकारी देते हैं। कुछ कृषि विश्वविद्यालय से जाती है, कुछ हमारे जो वहाँ के जो लोकल यूनिवर्सिटीज रहती है उनके पास से जाती है और कुछ हमारे जैसे जो संशोधन आधारित जो बीएसएफ बहुत अच्छा संशोधन करते हैं उनके द्वारा भी किसानों के साथ जाते हैं। तो क्या ये खाली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष में काम करती है? नहीं, है पूरे वर्ल्ड में बीएसएफ तकनीक के ऊपर काम करते रहती है। तो आज हमारे साथ ऐसे यूरोप और स्पेन से जो हमारे साइंटिस्ट है, डॉक्टर मार्टिन जो स्पेन से है, डॉक्टर रोलांड जो यूरोप देखते हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो आज वो आपको बताएंगे कि ये जो परिस्थिति है वहां किस तरह से टमाटर की खेती की जाती है, किस तरह से टमाटर को वहां के किसान मार्केट में लेके जाते हैं और वो अच्छी उपज लेने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। मैं डॉक्टर रोलांड और डॉक्टर मार्टिन का यहाँ तहदिल से भारत के किसानों के तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो संगोष्ठी है इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे, लेकिन उनकी जो भी कुछ चीजें छोटी छोटी रहती है मैं यहाँ संक्षिप्त में आपको उसकी एक समरी बताऊंगा, संक्षिप्त में उसका एक जिसको अनुवाद करके बताऊंगा और ये जो कार्यक्रम रहेगा ये आपके लिए आगे में भी उपलब्ध रहेगा। अभी मैं डॉक्टर मार्टिन को यहाँ विनंती करता हूँ। प्लीज डॉक्टर मार्टिन, वेलकम टू दिस टोमेटो वर्कशॉप डिजिटल मीटिंग। वेलकम टू डॉक्टर मार्टिन।
Thank you very much, Devendra. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. And good afternoon for all people. And today I want to speak about the cultivation of fresh tomato in Spain. I am in the south of Spain, the southeast of Spain, actually. And I am the senior manager technical marketing in BASF, and with several things. Okay, go to the presentation. This is the agenda of the presentation. I with in 20-25 minutes to speak about these points of fresh tomato. Yes, this is the data of fresh tomato in Spain. In Spain, the most of the fresh tomato in Spain go to the European markets for salad use. And these markets in Europe demanding high quality and nice visual appearance. You can see a different picture of different kind of tomato that we produce in Spain with high value and important yield per hectare. What are the market trends? The market trends are currently going to improve grafting to do more resistant plants, as well improving the organic healthy production, looking for new varieties with better flavor, color, resistant, etc. In short, the target of Spain tomato cultivation is to be aligned with the 2030 agenda in Europa and in the consumer. This is the market trends and the innovation. Okay, what is the evolution growing system? Those pictures resume the growing system in Spain in the last time in the Ejido area. The Ejido area is in Almería, is Andalucía, is in the southeast of Spain, and you can see here how is the Ejido in 60 years and how is now actual the Ejido, more than 50,000 hectares of greenhouses. We have two technologies. This is the basic technology with net and plastic greenhouses, and there are no climate control or high-tech irrigation system. But actually, the majority, the new greenhouses have high technology as automatic climate and irrigation control, hydroponic system, or rainwater collection. This is actually the most important surface of production tomato, fresh tomato in Spain. Devendra is mute. You are mute. सॉरी सो मार्टिन जी ने जो जानकारी दी है उसे अब हम संक्षिप्त रूप में बताता हूं मैं उसको। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पेन में टमाटर जो है ना एक महत्वपूर्ण फसल है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में टमाटर की एक अच्छी तरह से एक उन्नत तकनीक की इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जिस तरह से मार्टिन जी ने बताया कि स्पेन में अलग अलग प्रकार के, हमारे यहाँ भी बहुत अलग अलग प्रकार की वेराइटीज लगाई जाती है, किस्म लगाई जाती है, उसी तरह से वहां भी अलग अलग प्रकार की टमाटर की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे महत्वपूर्ण वहां किस तरह की खेती की जाती है? शेड नेट में। सो विभिन्न प्रकार के शेड नेट वहां होते हैं जिसमें वेराइटी और किस तरह से उसकी उपज में ध्यान रखाकर बनाया जाता है। यानी शेड नेट भी इंपॉर्टेंट रहता है और उसके साथ जो वेराइटीज रहती है वो भी महत्वपूर्ण रहती है। जो उसकी जो प्रजातियां रहती है टमाटर की, उसका भी उपयोग शेड नेट के हिसाब से करते रहते हैं। तो आपने पहले तस्वीर में देखा होगा कि किस तरह से अभी बदल चुका है, शेड नेट का क्षेत्र जो है आगे बढ़ चुका है और इससे टमाटर की खेती बहुत अच्छी तरह से की जाती है। सो आगे आप सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर मार्टिन क्या कहते हैं? ओवर टू यू डॉक्टर मार्टिन। Thank you.
Okay, the EPM is a normal process in Spain, and it starts with the soil preparation, with the solarization and biosolarization. The soil in Spain is heavily punished with constant crops, and which makes solarization a mandatory practice. You must start to clean pretty good the rest of the last crop to improve the next step. Firstly, to remove the of crop residues and add organic fertilizer to be biosolarization. Later, prepare the soil and put the irrigation system before to place plastic and to do the first irrigation to create a high humidity under plastic. We must maintain high humidity gases and hot under plastic at least 5 or 6 weeks before to remove the plastic with precaution because there are many gases. Later, a few days, cooling and ventilation, we can plant or do tractor works, and the solarization or biosolarization, has finalized properly. Yeah. But we have, sorry, Yeah, Devendra? please. No, okay, carry on. Sorry, yes. There are many mistakes that should not be made. For example, to leave areas without disinfection can contaminate the rest. Avoid breaks and opening areas in the plastic, like this one. And solarization localized by lines are not efficient. Let's go, Devendra. थैंक्स मार्टिन। देखिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरह से एक तकनीक का टमाटर की खेती के लिए की जाती है। सो वहां सबसे महत्वपूर्ण है कि आईपीएम की शुरुआत से खेती की तैयारी हो जाती है, ये महत्वपूर्ण है। अब बहुत सारी मृदा जनित बीमारियां हैं, जिस तरह से फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, पिथियम है, निमेटोड है, तो उसको काम करने के लिए और उसको बहुत अच्छी तरह से अगर हम उसको कम कर सकते हैं, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सोलराइजेशन रहता है, और उसके साथ उन्होंने और एक वर्ड उपयोग किया, शब्द का उपयोग किया, बायो सोलराइजेशन को हमने अपनाना चाहिए, उसके बारे में भी बता रहे थे। दूसरा है कि सोलराइजेशन फसल से क्या होता है, उसके अवशेष हटाना, बाद में मिट्टी की तैयारी करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तकनीक कहाँ उपयोग में होती है? ये तकनीक मुख्यतः शेड नेट के लिए हम उसको भूमि तैयार करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं अच्छी तरह से, और उसका जो प्लास्टिक रहता है उसको हमने अच्छी तरह से, वहां जो बताया गया है कि अच्छी तरह से सील कर देना चाहिए, और जो मिट्टी जो रहती है उसको कम से कम 5 से 6 सप्ताह तक धूप में सेकना चाहिए, बराबर है। यानी हम बहुत बार आपने देखा सूरज में या जब भी धूप काल रहता है तो उसको तपने देते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि जो मृदा जनित बीमारियां जो रहती है उसके नियंत्रण में आप कर सकते हैं, और उसके बाद उसको ठंडा भी होने देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सब होने के साथ उसके अंदर हम बोलते हैं कि बहुत बार एरेशन होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए, अंदर से बहुत अच्छी तरह से एक चयन होना चाहिए हवा का, एक अच्छा वातावरण जब बनता है, उसके बाद ही हमने क्या करना चाहिए, रोपण करना चाहिए, हमने हमारे ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। तो ये संक्षिप्त जानकारी अभी हमारे डॉक्टर मार्टिन सर ने दी। आगे में हम फिर से सभी उत्सुक है कि आगे में क्या बताना चाहते हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर मार्टिन। Thank you. In the cultural operation, the traps to do a physical pest control are very efficient to control several pests on the crops. The prevention must be the first option. The pheromones of sexual confusion are very used in Spain in several crops as vegetable, fruit, or grapes. For Lepidoptera or Tuta are very efficient, but we have preventive
because some can be dangerous for the bumblebees. Start to the crops with a seedling quality is synonymous with success. The grafting gives resistance to collapse problems, giving better crop health and productivity. We can start to introduce beneficial insects for the nursery as well. Let's go, Devendra. यस, थैंक्स मार्टिन। देखिए, अभी उन्होंने जिस तरह से बताया, हमने शुरुआत की थी आईपीएम से, सो वहां किस तरह से पीली स्टिक स्टेप्स अभी उन्होंने बात की थी, वो किसके लिए, अगर हमने सही इसका उपयोग करते हैं तो जो सफेद मक्खी है, बाद में उन्होंने एक लिरियोमाइसिया का नाम लिया, यानी जो हम बोलते हैं कि अन्नारा जो सापोरी या फिर लीफ माइनर जिसको बोलते हैं, उसको एक नियंत्रण करने के लिए एफिड्स आते हैं, चूसने वाली जो कीट रहते हैं, माहू, अन्य कीटकों को ये बहुत अच्छी तरह से पूरक बनाया जा सकता है, बन जाते हैं। उसके साथ उन्होंने और एक स्ट्रिप्स की बात की, कौन सी स्ट्रिप थी, नीली प्लेटे वाली स्ट्रिप्स। तो वो नीली प्लेटे से क्या हम कर सकते हैं, थ्रिप्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से विशिष्ट रूप से उसको हम उपयोग कर सकते हैं। बाद में हम देख सकते हैं कि उन्होंने और इल्ली, हमारे यहाँ इल्ली प्रजाति बहुत आती है, किसमें आती है, लेपिडोप्टेरा में आती है। तो लेपिडोप्टेरा की जो विभिन्न प्रजातियां है, अगर हमारे यहाँ कौन सा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है टूटा ऑब्सोल्यूटा। तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, फेरोमोन जाल के उपयोग करके हम उसको अच्छी तरह से बड़े पैमाने पे किसको पकड़ना चाहिए, उसके जो नर रहता है उसको पकड़ना चाहिए, जिससे हम कीटों का प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकते हैं, अच्छा पूरक बन जाते हो, एक में एक के साथ घुल मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पौधों के जब नर्सरी के लिए हम निकालते हैं, तो ये सब लाभकारी कीट जो रहते हैं, ये अगर हमने अच्छी तरह से हमारी नर्सरी में, बाद में हम जब उसको मुख्य फसल में लेके जाते हैं, अगर हमने उसका विस्तारित रूप में अच्छे व्यापक रूप में अच्छी तरह से उसका उपयोग किया, तो ये तकनीक हम बहुत अच्छी तरह से हम उसका उपयोग करके उपज ले सकते हैं। तो एक संक्षिप्त में बता रहे हैं कि किस तरह से हमने आगे हमारी जो नई तकनीक है किस तरह से उपयोग करना चाहिए। आगे देखना चाहते हैं तो डॉक्टर मार्टिन आपको और आगे बताएंगे किस तरह से टमाटर की खेती की जाती है। ओवर टू डॉक्टर मार्टिन। Thank you. The main pests are whitefly, aphids, tuta, lepidoptera, red spider, tomato rust meter, thrips, liriomycia of submarine. Depending on the area and in the site of crop, you may have more pressure for one pest or another. For the whitefly, you may use beneficial or chemical. In that case, you have 7 different action mode ingredients with registration in Europe. In recent years, we have lost several ingredients active that you can see marked in red as imidacloprid or metomil, thiamethoxam. You must down the pest pressure with chemical and continuous with biological to decrease the level of residues. In Europe, the level of residue in the supermarket is very controlled, and you must be quiet in the production. To Lepidoptera or tuta, we can use beneficial insects on and trap if you have not high pressure of pests, but if this level increase, you must use chemical. The damage in fruits, leaves of stem of tuta and Lepidoptera are important, and you can lose the crop if you have no fast and preventive control. Here, several examples of management strategies with trap, pheromones, and beneficials as trigogrammas or nesidiocoris is the most important beneficial used for tuta absoluta. Here we can see the pest evolution according to the positioning of the application. In the black line is without application, and we can see how the evolution of the pest is discontrolled. The blue line is with later application. When you do an application, you have a positive answer, but later you have more pest evolution.
And the purple line is with preventive application. If you have traps that advise that the pest increasing and you do a treatment, you have a pest under perfect control. For Tuta and Lepidoptera, we have 7 ingredient actives with different action mode, but we have lost another 4 in the recent years. For the red spider, Mite, the most common treatment is the sulfur, but we have several different action modes. We must wet the plant well for the treatment to be effective in the application. Here, our spray program proposal in insecticides in Spain with several products as acetamiprid, metaflumizone, lambda-cyhalothrin, pyroproxifen, sulfur, Beauveria baumannii, or ciflumethoxam. We have in each BBCH of the crop, you can use different solutions in insecticide in Spain. The diseases are highly influenced by the weather, and here are the most common. Powdery mildew is one of the most common diseases, and we have main ingredient active, but only 5 or 6 different action modes. One of the most common is sulfur as well, but the best effective is boscalid and pyraclostrobin, or the name is Meribon or Signum in Spain. Meribon is Signum in Spain. Early blight and late blight are very common in Spain, and the damage are very important. If you have not a preventive control, you can see the damage in leaves or in fruits. If you have not a fast and efficient control, you can lose all the greenhouse and crops. The evolution damage is very, very fast. We have very good solution to control the early and late blight, but you must act very fast and preventive. In the recent year, we have lost several chemical solutions because the authorities in Europe are very restrictive with the chemical products, and they are betting on more biological solutions. Bacteriosis is growing problem in recent years with intensive agriculture, and there are several bacteriosis as black spot or Pseudomonas or Clavibacter or another kind of Pseudomonas that provoke the death of the crop. This is the solution. There are no products to resolve this big problem. I have seen in the several greenhouses in my area that if you use properly products as Meribon before the problem appears, the plant is stronger and better to resist the bacteriosis, but it means delaying the death of the plant a bit. The preventive treatment of Signum or Meribon is the same, can reduce the impact of bacteria. Here you can see our spray program proposal in fungicides in Spain with several products. We are the leader. BASF is the leader in Spain in the fungicides market, but we have lost many best products with dimetomor because this ingredient active is in phase out in Europe. The nematodes is an increasing problem in Spain because the agriculture is too intensive and the soil are very punished. We have some solution with 3 or 4 action mode, but the methansodium
sodium, that is the one of the best solution, is close to the phase out in Spain, and in Europe this is a big problem. We must do cultural practice to prevent as solarization. The last one are the virus. In the global world, we have influence of several countries, and the spread of virus in the recent years has been very worrying. Here are some of the most important virus that we have. Tomato spotted wilt virus. There are no products to fight against them, but the seed company are improving and bringing out resistant varieties. We have seed resistant varieties. The same with the tomato yellow scab or curve virus. Only the varieties with resistance can be planted. Nobody plants without resistance. At the least one is the cucumber mosaic virus that cause big problems in plants and fruits, mainly with the coloration, for example. Okay, we have several products as Meribon, Signum in Spain, or Cabriotop that have excellent effects. We have done several research with the best university in Spain to see the excellent effects. Here you can see the result of one of these research with Signum, Meribon, and we have more fruits, and higher yield per hectare compared with other competitive products. We have with Signum less waste and bad fruits and higher fruit weight and size. The result concluded that using Meribon or Signum, we obtain more yield than better quality harvest. The cell life as well is better. Divendra, let's go. थैंक्स मार्टिन. ये बहुत महत्वपूर्ण था. उन्होंने जो बताया, आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने बताया था कि किस तरह से आईपीएम, बाद में सोलराइजेशन, बायो सोलराइजेशन और सब तकनीक्स उपयोग करके जिस तरह से हमारे यहाँ के टमाटर की खेती में जो भी कीट आती है, जो भी प्रकोप होता है रोग का, उसी तरह से वहां भी जो है उसी तरह से प्रकोप होता है, उसी तरह से उनकी भी वही समस्या है जो हमारी समस्या है. तो बीएसएफ जो है, इनके जो उत्पादक आपने देखा होगा कि उसमें नर्सरी से लेके तुड़ाई तक बहुत अच्छी तरह से उसकी सिफारिश की जाती है. और जो भी भारत के जिस तरह से किसान है, उसी तरह से स्पेन के जो किसान है वो उसी तरह से उसका उपयोग करते रहते हैं. तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी बताया है कि अलग-अलग प्रकार के रोग बताए, निमेटोड्स बताए, वायरसेस बताए, ये हमारे यहाँ भी आते हैं और उसी को जिस तरह से हम वहाँ के किसान भी उसका उपयोग करते रहते हैं. आगे में हम देखेंगे कि किस तरह से पूरा जो एक्सेलेंस उन्होंने बात की कि वो क्या है, ये हम संक्षिप्त में मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा. अभी हमारे साथ डॉक्टर मार्टिन जुड़े हैं, डॉक्टर रोलांड जुड़े हैं. ये अपनी जो भी संगठित बातें हैं वो आपके साथ करेंगे. सो ओवर टू यू डॉक्टर मार्टिन, डॉक्टर रोलांड. Thank you. Our seed company, Nunems, has very good varieties of different type of tomato. You can see here. And now the focus is to improve the resistance mainly to the tomato brown rugose fruit virus that in the last 2 years has the main problem in the producer of fresh tomato in Spain. Finally, the sustainability and new technologies is one of the main focus in the tomato production in Spain. Our partner Paloma is one of the best tomato producer in Spain and Europe. Has improved in water use and irrigation using hydroponic
system and irrigation with high-tech irrigation programs and machinery. They are use our system Agrigenio BASF to improve their yield and quality tomato. You can see here the sondas are different machinery to improve the efficiency of the greenhouse. They have high-tech greenhouses with central ventilations or central ventilation with automatic climate control, thermal screen for energy saving, automatic fertigation, hydroponic system, and heating system for the winter time as well. You can see here the heating system for the winter time. This is a high-tech greenhouses, and Paloma is one of the best customer of BASF in Spain. With focus in the Agenda 2030, they are installing photovoltaic solar panels in their reservoir with a double objective. One is energy savings, and the second is reduce of CO2 emission. This is the two picture of the reservoir in Paloma field with photovoltaic floating plates. Okay, let's go, Devendra. यस सो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ देख रहे थे कि किस तरह से उनसे जो उचित तकनीक की सिंचाई कार्यक्रमों में उपयोग होते रहता है, कुछ मशीनरियों का उपयोग रहता है, और आपने देखा होगा कि सभी खेतों में ड्रिप से सिंचाई की जाती है, आपने देखा होगा। और उस तरह से अभी यहाँ जैसे CO2 इमिशंस यानी वो भी वहाँ यानी जिस तरह से वातावरण के अनुकूल खेती की जाती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ की जो खेती है लगभग 90% टमाटर की फसलें जो है जिन्होंने शेयर किया वो हाइड्रोपोनिक्स के तहत की जाती है। सो उसी तरह से पोषण के अनुसार वहाँ क्या रहता है, जो जल रहता है सप्ताह का उससे सब जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, स्वयंचालित जलवायु का नियंत्रण होते रहता है। तो ये सब चीजें होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो खेती रहती है वो टमाटर जो रहते हैं वो एक हेल्दी टमाटर हमारे खाने जो के तैयार करते रहते हैं। तो किस तरह से आगे की टेक्निक आती है, किस तरह से वो और करते रहते हैं, वो हम डॉक्टर रोलैंड और डॉक्टर मार्टिन से जानते हैं। सो ओवर टू यू। Okay. I am finalized my presentation, and only thank you very much for your attention. And if you have any question, I am prepared to answer it. Thank you very much. Yeah. So in during the presentation time, the one just I want to once again recollect, और मैं अभी हमारे सभी पूरे यहाँ के साथियों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जब बात कर रहे थे ना तो एक बार उन्होंने एक वर्ड उपयोग किया था, एक शब्द का उपयोग किया था, वो शब्द का नाम था एक्सेलेंस। क्या था? एक्सेलेंस। और ये जो एक्सेलेंस है ना, ये आपने भी हमारे बहुत सारे आप हमारे उत्पाद उपयोग में लाते होंगे, उसके बहुत सारे जो हमारे उत्पाद के जो पैक है ना वहां आपने एक्सेलेंस देखा होगा। सो एक्सेलेंस है क्या? ये दो शब्दों में मिलाकर बनाया गया है, एग्रीकल्चर और एक्सेलेंस। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो रहती है हमारे, जो हम रोग के नियंत्रण के लिए उत्पाद लाते हैं, पर उससे भी बढ़कर उस पौध को जीवन संबंधी प्रभाव देता है। खाली प्रभाव देता है ऐसा नहीं, आपको लाभप्रद प्रभाव देता है, और उससे आपको बहुत सारा यानी अगर उस वैरायटी के अंदर, प्रजाति के अंदर कुछ उसका अच्छी तरह की क्षमता होगी तो क्षमता का पूरा निर्माण करने में मदद करता रहता है। ऐसा एक्सेलेंस प्रोडक्ट ये उत्पाद है। तो क्या, जैसे कि ऊंची पैदावार, बहुत अच्छी तरह से ऊंची पैदावार मिल सकती है, बाजार योग्य क्वालिटी सुधार में अच्छी तरह से हो जाता है,
खाली सुधार महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि उसकी जो क्षमता रहती है, अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलने में भी पैदावार अच्छी तरह क्षमता वृद्धि में फायदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो फसल है, टमाटर की फसल, वो बहुत सारे तनाव से गुजरती है, तो उसको तनाव सहन करने में मदद करती रहती है। तो ये एक्सेलेंस के साथ अब हम डॉक्टर रोलांड को यहाँ इनवाइट करते हैं। तो आगे का जो भी संगोष्ठी रहेगी, वो डॉक्टर रोलांड जो है यूरोप से आए हैं, ये आपको बताएंगे, जर्मनी में बैठते हैं, ये आपको आगे की टमाटर की जो तकनीक कैसे रहती है, किस तरह से, और हम अच्छी तरह से तकनीक उसका उपयोग करके उपज बढ़ा सकते हैं, देखेंगे। So Dr. Roland, welcome here in our presentations regional meeting. Doctor, you are on mute. Martin and Dr. Roland, yeah. Yeah, thank you very much, Devendra. Yeah. Good afternoon to everybody. In the next slides, I would like to share a bit more with you how BASF want to support the tomato production in different countries worldwide. So, yeah, doctor. Okay. When you look at the tomato production worldwide, then you see here the 10 biggest countries in the world contributing to the tomato production. We have in South America, Brazil. We have as well Mexico. We have in Europe, Spain, you have seen. We have the United States of America. In Europe as well, Turkey, Italy, and in Middle East, Iran, Egypt. But the two biggest tomato growing countries are really India and China. By area, by far, and India is as well the second biggest producer of tomatoes in volume. So tomato is really a global crop, and India is the second biggest tomato producer in the world. But with productivity wise, then you can see when it comes to the yield in tons per hectare in this case here, that India is still lagging a bit behind in average. Yes, you have seen like in Spain with high technology what is possible. The yields per hectare, they can exceed like in Spain in these top greenhouses even 25 kilograms per square meter, 250 tons per hectare. So the crop protection is only one part of the tomato production, but of course, without a proper disease and pest control, you will not be able to increase your productivity. So the disease and pest control is still the key, and still chemicals do a better job than biologicals in this instance, but we learn more and more how we can bring biologicals and chemicals to act together to control this disease and pests. And the other part of a good spray program is the plant health for high yield and quality. And as Martin Fuentes and Devendra have already told, with excellence, here we have possibilities to improve the plant health from the beginning, from the seedling, during the spray program until the harvest. And another point in the spray program is a proper resistance management for long-term success. Because once you have resistance against chemicals, then your control will be poor. And last but not least,
more and more we have to consider as well sustainability of our treatments for the environment, for the farmer safety, and the income of the farmer in the end. So with Merivon, Carbiotop, Sarcadis, Acrobat, and Sampro for the disease control, and Exponus, Cefina, Pyrate, we offer key brands for efficient spray programs in all these countries in the world, which I have shown to you before. One point I want to make here on the management of the resistance development against chemicals. It's really critical to maintain a good control of pests and diseases, to follow certain principal rules, to avoid that you get a selection pressure on certain pests and diseases that can then not longer be controlled. So integrated pest management using tolerant or resistant varieties and other disease-reducing crop management measures like the solarization are critical to start with. You should use recommended dose rates and limit applications of the same fungicide group, and use different mode of actions, as has been shown before as well. There is different mode of actions available usually, so it's possible to build programs. And always treat preventive and avoid curative and eradicant treatments. Mixtures of active ingredients as well can help to delay resistance. And of course, alternation is critical. The ground rule is not to use more than 1/3 of the sprays with the same mode of action. So if you build in, for example, this MCM, Merivon, Carbiotop, Merivon into a spray program, and you have, for example, 9 applications, you start, for example, with the Merivon to have a good foundation. Then you have a multi-site like a Polyram, an Azole, then an Acrobat Complete if the late blight is more predominating. And then you can start with the same mode of action like Carbiotop, which is as well pyraclostrobin again, and later come back as well with Merivon again. So that such a spray program would help to delay such resistance development by far. But looking forward a bit more in the future, the crop protection is only one part of a successful tomato production. It starts with the seed, as we have seen before. And we, as BASF, we want in the future to offer you a complete program. Starting with the seeds, we have acquired Nunhems, a successful breeding company who offer as well in India locally adopted varieties. And then, of course, from BASF itself, we offer you a broad fungicide and innovative insecticide portfolio. And beyond that, we offer, for example, as well, mulch films that support the production and can replace herbicides in the production. Another point for the future will be to integrate the production with digital support, where we have acquired a company called Horta, who provide decision support systems and as well as sustainability assessments of the program. We have started already the cooperation with that, like has shown before with Paloma in Spain, or here with TAT, the biggest tomato processor in Turkey, to move that forward and improve the production overall. So it starts, with the variety, where you can have a variety with a better resistance against pests, and offering as well at the same time a superior productivity, better uniformity of the tomatoes, overall resulting in a superior quality.
And then Horta, I mentioned the digital support addresses all parts of the production: fertilizing, pest management, irrigation, tracking of the measures, and as well sustainability. So that results, for example, then in spray program recommendations during the season, like trialed here in Turkey, where you have two major diseases controlled, late blight and early blight, but as well powdery mildew. And you have here the different products that are building the spray program, addressing on the one hand the disease control, the resistance management, but as well the control of the disease and the plant health. So in that case, here no disease was observed, but with the support of the digital tools, there could be 2 applications of late blight and 1 application of powdery mildew saved compared to the standard spray program. So overall, to summarize that, we as BASF want to be a partner in the tomato production worldwide with innovation in chemicals, but as well new varieties, in service like digital support tools, and a long-term partnership to grow the tomatoes together through a complete offer, a continuous flow of innovation and services, improved yield and income for the grower should be the result in the end, with an improved sustainability at the same time. So summarizing today's seminar, we can say for a successful tomato production with a higher productivity, the field selection and the preparation is key. Use solarization at the beginning to reduce the soil-borne diseases, then select the right variety for your area with good resistance properties and a high productivity, and make the chemical applications as preventive as possible. When you see the disease or the pest, it's too late. It's too late. It will be difficult to control the population. You always should follow the weather conditions and your experience from the past, and then make preventive treatments. And use a decision support tool or your local BASF advisor to customize your spray program. And of course, here we wanted today give you as well some ideas how you could innovate your production system to further improve the yield and profit of your tomato production. Thank you very much from my side, and Devendra will translate a summary for you here. Thanks, Roland. I think it's great to hear the same. उन्होंने हमको बताया कि किस तरह से शिफा जो आपकी सेमिनार हमने लगभग पिछले 50 मिनट हम सुन रहे थे डॉक्टर मार्टिन को और डॉक्टर रोलैंड को। सबसे महत्वपूर्ण है कि टमाटर की खेती महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि खेती का चयन किस तरह से करना चाहिए, उसकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि जो मृदा जनित रोग जो है उसको जो जमीन से जिसका वहां से बढ़वार होती रहती है, और हमने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से हमका सीडलिंग से ही डिसीज शुरू हो जाते हैं, और अगर हमारा बचपन में पौधा उसमें रोगग्रस्त रहेगा तो हमको उपज नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं? भारतवर्ष यहाँ सूरज अच्छा रहता है, तो क्या हम सौरीकरण का उपयोग कर सकते हैं क्या? तो मेरी सभी से आज जो जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई है उनसे विनती है कि सौरीकरण का हम उपयोग करके एक शुरुआत की अवस्था में ही हमारी जो जमीन जहां हम उपज लेने वाले उसको निर्जंतुक कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि कौन सी प्रजाति का उपयोग करने वाले हैं। हमने देखा है कि हर जगह का जो उसका जो वातावरण रहता है वो आबोहवा जो रहती है वो बदलती रहती है, तो उस हिसाब से उसके कारण जो भी उसकी जो वहां जो अच्छी तरह से उपज वाली जो किस्म रहती है, वेराइटी रहती है, उसका हमने उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रतिरोधी गुणों वाले होने चाहिए।
यानी जिसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस उसके ऊपर होनी चाहिए, कि जिससे हमारा जो उपज के ऊपर का जो भी हम ज्यादा महत्व देते हैं उसको हम एक उपज की क्वालिटी बढ़ाने में महत्व दे सकेंगे। तो अच्छे वैरायटी का चयन करना चाहिए। तीसरा एक महत्वपूर्ण है कि जो टमाटर का एक अच्छी उपज लेने के लिए है, हमको प्रोफिलैक्टिकली, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी हमारे टीम मेंबर्स आपसे मिलते हैं, किसान भाइयों से सब मिलते हैं हमारे फील्ड टीम मेंबर, तो बोलते हैं कि पहले दवा डालिए। तो सबसे कहना इंपॉर्टेंट कि रोग आने से पहले ही हमको उसको उसको उसका नियंत्रण करना है, उसका व्यवस्थापन करना है। ये ध्यान में रखिए कि आपको रोग आने के पहले ही टमाटर का व्यवस्थापन, रोग व्यवस्थापन करना है, प्रोफिलैक्टिकली ही दवा का छिड़काव करना है। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है रेजिस्टेंस मैनेजमेंट। मैंने देखा है या हम देखते रहते हैं कि एक ही ग्रुप की, एक ही कुटुंब की एक ही दवा हम अलग अलग ब्रांड नेम से उपयोग करते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, उसके अंदर प्रतिकार शक्ति निर्माण हो जाती है, कीट में भी होती है, रोग में भी होती है। जिस वजह से हम आज इस संगोष्ठी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप किसी रसायन का चयन करते हैं, फफूंदनाशक का चयन करते हैं, कीटनाशक का चयन करते हैं, तो उसमें प्रतिकार शक्ति का व्यवस्थापन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान भाई या सभी प्रगतिशील किसान भाई जुड़े हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी है ये जो रसायन है, इसका अगर हमको सही लंबे समय तक अगर उसका उपयोग करना है, तो प्रतिरोधिक व्यवस्थापन जो है, रेजिस्टेंस मैनेजमेंट का हमने सही चयन करना चाहिए, सही रसायनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट उन्होंने और एक बताया कि आप ये जो प्रोग्राम है, स्प्रे प्रोग्राम, आपने देखा होगा कि इसके पहले कि स्पेन हो, यूरोप हो, भारत में भी हम जब हमारे मिलते रहते हैं तो हम हमारे मीटिंग्स होती रहती है, पूरा स्प्रे शेड्यूल बताते हैं। तो उस तरह का हमने एक अच्छी तरह से उसका उपयोग करना चाहिए कि जिससे उसको हम उसका ये रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर रोग का नियंत्रण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए बहुत अच्छी तरह से समाधान ले सके। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तिगत सेवाएं हम हमारे टीम मेंबर मिलते रहते हैं आपसे, और कुछ डिजिटल ऐप भी है, जैसे एक्जेनी जैसा टोमेटो का ऐप है, कि जिसके अंदर आपके खेत के बारे में आपकी जानकारी पूरी मिल जाती है आपको कि कब क्या क्या हमने कार्य करने चाहिए टमाटर की खेती में। तो ऐसी जो सेवा है उसका भी आप उपयोग ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका उपज सबसे महत्वपूर्ण है, और जिससे हम अच्छी उत्पादन, एक नई जो प्रणाली है उसके हम लंबे समय तक उसका उपयोग कर सके, जिससे एक अच्छी फसल हम ले सके, टमाटर की फसल ले सके। क्योंकि हम सभी का उद्देश्य एक है कि हमारे जो टमाटर के किसान भाई है, एक अच्छी दर्जेदार क्वालिटी वाली उपज ले सके, क्वालिटी के साथ उसका उपज का यानी उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। खाली क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी लेना महत्वपूर्ण है। आज का जो संगोष्ठी का यही एक हम बोल सकते हैं कि हमने उसका सिफारिशें तैयार की है, कि समरी निकाली है, जिससे आप अपने टमाटर की जब किसानी करते हैं तो उसमें उपयोग कर सके। आज हमारे साथ डॉक्टर रोलैंड और डॉक्टर Martin Jure. Dr. Martin and Dr. Roland, I am very much thankful to you for giving this excellent lecture to our tomato growers in India. Yeah, and you have any concluding remarks, so we'll go for any question and answers from our beloved growers. Yeah, over to you, Roland, over to you, Martin. Yeah. Devendra? Yeah. मैं यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चन बैकग्राउंड से बता देता हूँ. So we have a first question from one of our viewer. हमारे पास अभी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं वो जो उनके जो जवाब है वो थोड़े हम लेते हैं. ओके, सो 1 मिनट, मैं अभी क्वेश्चंस देखता हूँ. Dr. Roland and Dr. Martin, we have a questions. Now we'll go for the question and answers. Yeah, 1 minute. Devin? हाँ, yeah. So, yeah, हाँ,
Sagar, please. Now I Yep. got the questions. Yes, great. So please, maybe there is one slide remaining. You Okay, can hi, take that. please. Okay, yeah, okay. Yeah. Shall I move to the next to the slide to the program? Yeah, yes. One slide, I think. Please share the slides. I will explain it in Hindi to my the Indian growers. हाँ, so Sorry. मैं सभी किसान भाइयों को फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ. Sorry, it jumped again. हाँ, तो ये जो आप देख रहे होगे टमाटर की फसल है. हमने जब लगभग हम देखते हैं कि 100 से 120 दिन की हमारी फसल रहती है और फूल से फल तक अलग अलग उसके ट्रांसप्लांटिंग के बाद अलग अलग रोग आ जाते हैं, अलग अलग कीट आ जाती है. और हमारे डॉक्टर दोनों जो एमिनेंट साइंटिस्ट है उन्होंने आपको पूरा बताया उसके बारे में. लेकिन एक कुछ जिसमें आप इस जो मैं उत्पाद के बारे में बताने वाला उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं. भारतवर्ष में ये उत्पाद वहाँ किसानों के साथ हमारे बाजार में उपलब्ध है. तो सबसे शुरुआत में पॉलीग्राम जो है इसका आप उपयोग कर सकते हैं. ये स्पर्शजन्य फफूंदनाशक है. उसके साथ सेफिना जो है शुरुआत में जो भी कीट आ जाती है पर्टिकुलरली जिस तरह से बात की थी सफेद मक्खी, उसके नियंत्रण के लिए आप उपयोग कर सकते हैं. पिछले साल हमने इल्ली के लिए एक ब्लॉकबस्टर जिसको बोलते हैं नई टेक्निक वाला उत्पाद मार्केट में लाया था. वो एक्सपोनस है. जो भी हमारे टमाटर के अंदर फल खाने वाली जो इल्ली है उसके नियंत्रण के लिए फल छेदक इल्ली जो बोलते हैं उसके हेलिकोरोपा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है उसके नियंत्रण के लिए आप एक्सपोनस का उपयोग कर सकते हैं. 2 छिड़काव आप एक्सपोनस के ले सकते हैं. इसकी जो टमाटर के लिए इसकी जो मात्रा जो है 25 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से आप जा सकते हैं. उसके बाद फूल धारणा जब हो जाती है उस समय के लिए हमारे पास मेरियन का आप मेरियन उपयोग कर सकते हैं कि जिससे आप जो शुरुआत में अवस्था में आगे में जैसे अर्ली ब्लाइट है, सेप्टुला ब्लाइट है, उसके नियंत्रण के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं. सफेद मक्खी के लिए मैंने पहले बताया सेफिना. और एक 2 सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपके किसानों के साथ टमाटर की खेती के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट है वो है अपना कैब्रियो टॉप. तो कैब्रियो टॉप जो भी अर्ली ब्लाइट है या फिर आपके लेट ब्लाइट है उसके नियंत्रण के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं. और लेट ब्लाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पछेती झुलसा जिसको हिंदी में बोला जाता है तो वहां आप अपने 2 हमारे प्रोडक्ट है एक्रोबैट कंप्लीट और ज़ैम्प्रो, इसका आप उपयोग कर सकते हैं. एक्रोबैट कंप्लीट एक जिस तरह से आज आपने बात की थी यहाँ रेजिस्टेंस मैनेजमेंट की, प्रतिकार शक्ति, तो वहां आप इसका उपयोग अच्छे कर सकते हैं कि जिससे जो कीट के रोग के लिए कोई प्रतिकार शक्ति निर्माण ना हो. और जिस तरह से मेरियन के हमने 2 बार हम एक सीजन के अंदर एप्लीकेशन बताते हैं, एक्सपोनस का एक सीजन में 2 एप्लीकेशन बताते हैं. इसी तरह से संक्षिप्त में मैंने आपको ये जो टमाटर का स्प्रे शेड्यूल है बताने की कोशिश की है. हमारे पास समय एक महत्वपूर्ण है लेकिन हमारी जो टीम है वो फील्ड में आपके साथ उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हमारे साउथ के जो भी डिस्ट्रिक्ट है स्टेट्स है जैसे कर्नाटका है, बाद में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पूरे भारतवर्ष में हमारी टीम काम करती रहती है. उनके पास ये पूरी टमाटर की जानकारी है तो वो आपके साथ रूबरू मिलेंगे और ये पूरी जानकारी जो भी मैंने स्प्रे शेड्यूल यहाँ संक्षिप्त में बताया वो पूरा स्प्रे शेड्यूल आपको वहाँ समझा के देंगे. इसके बाद का जो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है. मैं प्रश्न के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर समय की कुछ पाबंदी आ जाती है तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि ये प्रश्न के उत्तर आपके पास मिल जाएंगे. ओवर टू यू सागर, डॉक्टर रोलांड एंड डॉक्टर मार्टिन, और फिर हम प्रश्न लेते हैं. Okay, thank you, doctor. So maybe Roland, this question is mainly for you. The question is, how many sprays taken by European grower to manage the pest and diseases, and are those preventive or curative? Yeah, I mean it depends on the country and the growing system, but usually there can be between 10 and 15 sprays
it's more or less on a weekly basis. But when you have, for example, here like these field tomatoes, which you see on this screen here, they would follow a decision support system and only spray depending on whether there is a disease pressure according to the weather or not. So, but generally, preventive treatments are more and more common. ओके ग्रेट. तो जस्ट ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, सो क्वेश्चन यही था कि नॉर्मली टमाटर में स्पेन में कितने या यूरोप में कितने स्प्रेज होते हैं, और वो मेजरली अपना प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले करना चाहिए या रोग आने के बाद. सो अगर हमें देखा जाए तो आइडियली हमें रोग आने से पहले जो है वो जो स्प्रेज है वो हमें आइडियली करने चाहिए यहाँ पे. देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि maybe Martin, you can answer this question. So why the yield of Spain is less than USA, even when 90% area is under hydroponics? So this is the question from mainly from the Punjab. So these are again the progressive growers of tomato. So you may answer this question. But the question is, how many percent of hydroponic there are in Spain? Almost he's saying 90%. I think there was the sentence written in the presentation, so he must have taken the. So Sagar is mute. Yeah. Okay, so I'm just repeating the question. So the thing is, he's asking ki why this productivity of a Spain is maybe little bit lesser than USA. Even this advanced technique of hydroponics, is there any specific reason, or maybe the area or something like that? So I think you know it better, so you can try to answer it. Yeah, maybe I can take that as a part as well. So I mean, Okay. This is pure statistics from the FAO statistics, these figures, and it's an average figure which comes from different production systems. So it includes field tomatoes as well as greenhouse tomatoes. So you can't necessarily say that the production system in the US is more efficient than in Spain. I think you have to compare then the greenhouses that are used or the field tomato production system if you want to compare. But generally, the highest technology, as shown in the last slide from Martin Fuentes, that is the highest standard you can find worldwide. And the companies who are offering them, they offer them in the US, in Spain, but as well Netherlands is a country where they produce in such greenhouses. Okay. So again, there is one more question related to the diseases. So in the late infection time, means maybe in the delayed or latter phase of the crop, how to identify late blight and early blight? Because we study the symptoms in books that are very clear, but in the field, the all farmers get confused while identifying these diseases. So is there any specific thing which we can tell to how to differentiate both the diseases? So maybe Devendra, I think you can also take this question. या सो मैं हिंदी में बताता हूँ. एक Yes. दो चीजें है कि अर्ली ब्लाइट और सेप्टोरिया ब्लाइट में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. पहले एक है कि अर्ली ब्लाइट में हम बेसिकली बताते रहते हैं, आप जब भी फील्ड में जाते हैं तो उसके ऊपर संकेंद्रित ये रहते हैं, आप धब्बे दिख जाते हैं. जैसे अपना अंगूठा रहता है ना, तो अंगूठा के ऊपर जो भी इस तरह से रेशाएं रहती है, उस तरह से अगर आपको धब्बे दिख जाते हैं तो दैट इज अल्टरनेरिया ब्लाइट. सेप्टोरिया ब्लाइट में क्या होता है कि सेप्टोरिया ब्लाइट में छोटे छोटे धब्बे रहते हैं, और जो लेड ब्लाइट लास्ट में आता है, लेड ब्लाइट का क्या है, उसके जो इन्फेक्शंस रहते हैं वो पूरा पत्ता कवर कर लेते हैं और एक सरीके जाते रहते हैं. एक बार शुरू होगा कि पूरा का पूरा पत्ता कवर कर लेता है.
अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में दोनों में है कि लेट ब्लाइट बहुत जल्दी फैलता है और आपका जो प्लॉट जो रहता है पूरा का पूरा बैठ जाता है। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट है अर्ली ब्लाइट के अंदर कि अर्ली ब्लाइट में आपके जो डंठल रहती है वो भी कवर होती है, उसके ऊपर भी इन्फेक्शन आ सकता है। दूसरा है कि पत्ते जो रहते हैं उसके ऊपर भी आती है, फल के ऊपर भी आती है। सेप्टोरिया ब्लाइट में जो भी 90% पूरा का पूरा लीफ एक महत्वपूर्ण रहता है कि जिसके ऊपर ही ये आता है और पूरा का पूरा ये नीचे लीफ डिफोलिएशन हो जाता है और जिस वजह से आपके जो पत्ते रहते हैं नीचे गिर जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है लेट ब्लाइट के अंदर आपको बहुत बार ओलियो ग्रीन टाइप के फल दिख जाते हैं कि जो आपके इसके ऊपर जो पछेती झुलसा रहते हैं उसमें तकलीफ देते रहते हैं। एक थोड़ा सा जो भी हम जब फील्ड में घूमते तो ये आपको एक सिम्टम दिख सकते हैं उसमें। ओके, चलो। ओके, थैंक यू देवेंद्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा है हमारे एक उत्तर प्रदेश के किसान भाई ने कि एक ऐसा कोई एप्लीकेशंस बताए जिसके में हम बीएसएफ के प्रोडक्ट की जानकारी मिल पाए। सो मे बी इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। सो कैसा है, ऑलरेडी हमारा एक एक्जीनी करके ऐप है जिसमें हम टोमेटो के बारे में जो भी रिलेटेड मतलब एज अ क्रॉप आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहां पे मिल जाएगी। और ये ऐप जो है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सो गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके आप टोमेटो की जानकारी इसमें ले सकते हो। दूसरा, हमारा जो बीएसएफ का वेबसाइट है, तो वेबसाइट में आप अगर जाते हो तो वहां पे भी आपको जितने भी बीएसएफ के प्रोडक्ट जो टोमेटो में लेबल्ड है या जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देन तीसरा, जितना भी अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक, आप जो भी फेसबुक या यूट्यूब पे अगर जा करके बीएसएफ टाइप करोगे तो बीएसएफ इंडिया का एक अलग से पेज वहां पे होगा। तो जो भी रिसेंटली जो भी हमारा कुछ नया टेक्नोलॉजी या नए प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में जानकारी, या फिर टमाटर या बाकी जो क्रॉप्स है उनके बारे में भी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप सोशल मीडिया पे आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको बीएसएफ के लिंक्स मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर आपको बीएसएफ के प्रोडक्ट्स की जानकारी मिल जाएगी। एंड अगर आपको इसके बाद भी अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आपके इलाके में जो भी आपका कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का शॉप होगा जहां पे आपको ये पेस्टिसाइड दवाइयां मिलती है, वहां पे आप जा करके अपने बीएसएफ रिप्रेजेंटेटिव का नंबर लेकर के उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनसे आपको मिल जाएगी। ठीक है। एंड देन अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऑलमोस्ट अभी 5:10 होने वाले हैं। सो मैं अभी लास्ट का एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें पूछा गया है कि रोलैंड ने उनके प्रेजेंटेशन में एक एमसीएम मेरियोन कैब्रोटॉप मेरियोन की बात किया था, साथ ही में देवेंद्र ने भी एक्सेलेंस के बारे में थोड़ा सा बात किया था। तो ये एग्जैक्टली है क्या और इससे मतलब टोमेटो को कैसे बेनिफिट मिल सकता है? सो मे बी देवेंद्र यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, देखिए ये एक एमसीएम का सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी हम हमारे किसान भाइयों के साथ मिलते हैं तो उसमें 2-3 चीजें एमसीएम का उन्होंने बताया, उनके प्रेजेंटेशन में था। एम यानी मेरियोन का है, सी यानी कैब्रोटॉप का है और दूसरा एम यानी मेरियोन का है। तो जो भी हमने शुरुआत की अवस्था देखी, फूल की अवस्था में आपको मेरियोन का स्प्रे करना है, एक कैब्रोटॉप का है। तो पहले इसमें हम देखते हैं कि हमको जो रोग जो आता है उसके उसके यानी उसका जो फूल जो है उसको जुड़ा रखना बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें पहला एम काम करेगा। दूसरा है कि फल को अच्छी तरह से उसको जोड़ने के लिए हमको कैब्रोटॉप काम करेगा और लास्ट में हमको अच्छी उपज लेने के लिए हमारे पास फिर से एक अच्छी क्वालिटी उपज लेने के लिए मेरियोन का काम करेगा। सो ये दोनों जो है इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मेरियोन और कैब्रोटॉप जो है ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि वो है आपको एक्सेलेंस में बेनिफिट करेंगे। सो जो एक्सेलेंस है वो ये 2 प्रोडक्ट से आपको अच्छी तरह से आ सकता है। और आपकी जो हमने जो बात की थी क्वालिटी और क्वांटिटी, वो ये एमसीएम के माध्यम से आपको मिल सकती है। और मैं आप सभी किसान भाइयों को जानकारी देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि एमसीएम का प्रयोग आप अपने इस साल 2023 में जो भी टमाटर की आप खेती करने वाले उसमें उपयोग कीजिए। सो धन्यवाद, ये बहुत अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन पूछे। एंड डॉक्टर रोलैंड एंड डॉक्टर Martin, the whatever the feedback we are receiving from the farmers, they are very appreciated our presentations and giving a clap for us. So thank you very much. Yeah, over to you, Sagar. Yeah, thank you very much to you as well.
So once again, thank you, Dr. Roland and Dr. Martin, and along with this, Dr. Devendra as well. So definitely अभी आज जो मतलब जितने भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत सारा धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाल के हमारे साथ जुड़े रहे और ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने सुना. सो यहाँ पे विद दिस हम जो है ये आज का जो अपना फार्मर मीटिंग टोमेटो वेबिनार है वो यहाँ पे खत्म करते हैं और इसके बाद भी ये वेबिनार जो है वो आपको यूट्यूब पे लाइव मतलब इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा थोड़े दिनों में. और इनकेस अगर इसके बाद भी आपके कोई भी सवाल अगर हमारे पास आते हैं तो आपके फोन नंबर्स हमारे पास है तो हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपके सवालों के जवाब आपको दे देंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड शुक्रिया. या धन्यवाद. BASF. We create chemistry.